Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghazali Institute of Medical Sciences, the video tutorial series. This lecture is for Human Anatomy Semester 1, BS Paramedics and DPT students. My name is Dr. Abdul Khan. I am a lecturer at Ghazali Institute of Medical Sciences. Today we will discuss about the anatomy of large intestine. As we know that abdominal cavity consists of different organs. These are the part of the GIT system, the gastrointestinal tract, that include the stomach, small intestine, large intestine, and along this, the accessory organs. The accessory organ included liver, spleen, pancreas, gallbladder. All these are the accessory organ of the GIT tract. Along this, we'll have the glands and the urinary organs, part of reproductive system as well. Look at this diagram. It's a general overview of the large intestine, that it consists of the cecum, that is the part from where the small intestine ends and large intestine started, and then it goes upward to ascending colon, converted into transverse colon along the epigastric and umbilicus area, and then goes down to descending colon. Then it turns to sigma, that is sigmoid colon, and then ends with the rectum and the anus. We will discuss all these parts individually, but that was the general overview. And this part, the narrow muscular tube, that is the appendix, appendicitis. The large intestine is a part of alimentary canal which extends from the cecum to the anus. Large intestine is a part of alimentary canal. We know that alimentary canal is a large tube that extends from mouth to the anus or to the rectum. So, large intestine is also the part of that alimentary canal which extends from the cecum to the anus. You have mentioned it is the first part, the cecum, and that is the end of the large intestine. So, this whole area is considered is large intestine. It have a length of 1.5 meters. The surface area is of 2 square meter, and that is divided into following these parts. It have small surface area compared to small intestine. Small intestine have large surface area, and that is because of that is the main organ for the digestion, that is the absorption. Later on we will study the functions that the small intestine contribute up to 90% of the digestive process. So it has to be provided with the large surface area. That's why it's been provided. So it is divided into following these parts: the cecum, transverse colon, ascending colon, descending colon, sigmoid colon, and the appendix. First one is the cecum. Cecum is that part of the large intestine that lies below the level of the junction of the ileum with the large intestine. ऐसा part of the large intestine जो कि below the level of junction पाया जाता है. कहाँ पे कौन सा junction होता है? इलियम का large intestine के साथ junction बनेगा, इलियम और cecum का. तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे एक junction बनती है, और उसके नीचे जो part होगा उस part को हम कहेंगे cecum. In other words, it is a part that connects small intestine with the large intestine. इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं. Like इसको अगर आप देखें, ये जो space है, इस space में small intestine होती है, and then small intestine come and connect with the cecum, that is the start of the large intestine.
So the end of the small intestine is ileum and start of the large intestine is cecum. There is a junction that would be called ileocecal junction. And ileocecal junction फंक्शन क्या है इसका कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है विद द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. It is a blind-ended pouch that is situated in the right iliac fossa and is completely covered with the peritoneum. ठीक है. It possesses a considerable amount of mobility and longitudinal muscle is restricted to 3 flat spans and they're called tenae coli. It possesses a considerable amount of mobility. It means these are the organ. This is the organ that show mobility, movement. ये जो movement show करते हैं और इसमें longitudinal muscles होंगे that will be restricted to 3 flat spans. It means कि it have longitudinal muscle. उसमें 3 bands होती है और उस band को हम कहेंगे tenae coli. ठीक है. Strips type हो जाती है और उसमें उसको हम कहेंगे tenae coli. This is the part small intestine and then will connect to the large intestine. So यहाँ भी जो part बनेगा उसको हम कहेंगे ileocecal junction. ठीक है. इस डायग्राम में देखिए small intestine and then large intestine. इस junction को mention किया है. Next is the appendix. Appendix is the narrow muscular and large tube that containing amount of lymphoid tissue. Basically appendix क्या है? एक narrow muscular tube है जिसमें lymphoid tissues होती है. The base is attached to the posterior medial surface of the cecum. जो posterior medial surface है उसके साथ ये attach होता है. ये इसका posterior देखो back side से निकला है और ये mid है. That's why posterior medial side से ये arise होता है जो कि appendix कहलाता है. It has complete peritoneal covering which is attached to the mesentery of the small intestine by mesoappendix. Mesoappendix का मतलब क्या है कि इसका मिडिल पोर्शन ऑफ अपेंडिक्स उसको हम कहेंगे mesoappendix. तो इट मीन इसमें कंप्लीट पेरिटोनियल कवरिंग है. पेरिटोनियम जो है वो कंप्लीटली कवर करता है. जो mesoappendix है वो मेसेंट्री के साथ अटैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होगा बाय मींस ऑफ मेसेंट्रीज. एंड दीज mesoappendix कंटेन appendicular vessels and the nerves. ठीक है. इसका काम क्या है? यहाँ पे appendicular जो vessels और nerves वो इसमें पाए जाते हैं. The tip of the appendix it may be found in the 3 position, that is into the pelvis against the right pelvic wall. एक स्टेप ये आ जाती है कि pelvis की तरफ जाती है जो कि right pelvic wall के साथ right side पे होगा. Behind the cecum इसका एक पार्ट जा सकता है. Lateral side of the cecum and in front of or behind the terminal part of the ileum. ठीक है. क्योंकि इलियम सीकल के बीच में ये पार्ट है बेसिकली अटैच होता है सीकम के साथ. दैट्स व्हाई इसकी जो पोजीशन है जो टिप है वो यहाँ पे वेरी करेंगे इन दिस पोजीशन. या वो पेल्विक साइड पे आएंगे राइट साइड पे, या सीकम के बिहाइंड से अटैच होंगे, या सीकम के साइड से अटैच होंगे, या इन फ्रंट और बिहाइंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम इसके साथ अटैच होंगे. The first and second position are the most common sites. ठीक है. ये तो first 2 जो positions हैं they are common sites. Ascending colon. The ascending colon extends upward from the cecum to the inferior surface of the right lobe of the liver. Ascending colon क्या है? कि cecum से extend होता है upward. कहाँ पे होगा? Towards the inferior surface of the right lobe of the liver. क्योंकि राइट साइड पे है लिवर के 2 लोब्स होते हैं राइट और लेफ्ट. तो राइट साइड का जो इंफीरियर लोब है उसके साथ ये अटैच होता है. ये इस डायग्राम को आप लोग देखें अप साइड जाता है तो एसेंड कर रहा है एक्सटेंड अपवर्ड, और यहाँ पे लेवर होगा तो लेवर का जो इंफीरियर पार्ट है उसके साथ ये उसके नीचे अटैच होता है. ठीक है. अच्छा. Where it turns to the left and forming the right colic flexure. क्या होगा कि inferior side of the right lobe के बाद फिर ये टर्न हो जाता है into left side.
जहाँ पे राइट कॉलिक फ्लेक्सर ये बनाता है और उसके बाद फिर वो ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ मिल जाता है. The peritoneum covers the front and the sides of the ascending colon, binding it to the posterior abdominal wall. जो पेरिटोनियम इसका होगा वो बेसिकली क्या है कि फ्रंट और साइड से इसको कवर करके करते हैं सो दैट कि एब्डोमिनल वॉल के साथ इसको अटैच किया जाए. Next is the transverse colon. The transverse colon extends across the abdomen, that is occupy the umbilical region. Across the abdomen means कि left to right ये जाता है और umbilical region में सारा occupied होता है. और ये कहाँ पे होगा? इसको अगर हम देखें like this, ascending colon खत्म हो जाता है, उसके बाद ये सारा फिर यहाँ पे transverse colon. So ये appendix umbilical region है और ये सारा across the abdominal part means left to right. Okay. It begins at the right colic flexor below the right lobe of the liver and hangs down suspended by a transverse mesocolon from the pancreas. Ascending colon जैसे inferior side of the liver होता है तो उसके बाद फिर ये start हो जाता है. फिर downward आएगा, suspend होता है by means of mesocolon with the pancreas. It then ascends to the left colic flexor. फिर लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर की तरफ आ जाता है बिलो द स्प्लीन और लेफ्ट कॉलिक जो फ्लेक्सर है वो हायर होता है एज कंपेयर टू राइट फ्लेक्सर एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द डायफ्राम बाय मींस ऑफ फ्रीनोकोलिक लिगामेंट. फ्रीनोकोलिक लिगामेंट राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो होगा स्प्लीन के साथ वो अटैच होती है बाय मींस ऑफ लिगामेंट, तो यहाँ पे इसके साथ ये सस्पेंड होगा. ठीक है. The transverse mesocolon suspend the transverse colon from the interior border of the pancreas. Interior border of pancreas के साथ ये transverse जो है mesocolon mean mid जो part है वो attach होता है जो suspend है. It is attached to the superior border of the transverse colon and posterior layer of the greater omentum are attached to the inferior border. It is attached to superior border of the thoracic colon. Thoracic colon का superior border है और posterior layer of the greater omentum उनके साथ attach होता है और inferior border के साथ भी. ठीक है. Descending colon. It is about 10 inch, that is 25 centimeter long. Extend downward from the left colic flexor to the pelvic brain. ठीक है. Pelvic brain का मतलब कि pelvic base है, pelvic floor. तो इट एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर. लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर से स्टार्ट हो जाता है मींस आफ्टर ट्रांसवर्स फिर ये डिसेंड हो जाता है, डाउनवर्ड आएगा और उसके बाद फिर वो सेगमाइड कोलॉन के साथ मिल जाएगा. द पेरिटोनियम कवर्स द फ्रंट एंड द साइड्स एंड बाइंड इट टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. पेरिटोनियम जो होगा फ्रंट और साइड से अटैच करके और फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ इसको अटैच करेगा. Is attached interiorly to the coils of the small intestine and a greater omentum and the interior abdominal wall. Means कि इसकी जो attachment होगी वो small intestine की जो coils हैं उसके साथ attach होगी, greater omentum के साथ attach होगा और interior abdominal wall के साथ. Also attached posteriorly to the lateral border of the left kidney. ठीक है. तो इसका side का जो border है लेफ्ट किडनी का उसके साथ भी ये अटैच होता है. Next is the sigmoid colon. It is 25 to 38 centimeter long and begin is the continuation of the descending colon in the front of the pelvic brain. जो pelvic floor है, pelvic cavity है, वहाँ पे ये descending colon के बाद sigmoid colon आ जाते हैं and below it becomes continuous with the rectum. ठीक है. उसके बाद फिर rectum आ जाता है. The sigmoid colon is mobile, movement करता है, hang down होगा into the pelvic cavity in the form of loop. ठीक है. जो pelvic cavity है वहाँ पे ये suspended होगा, hang होगा, just like एक loop form में, रस्सी type. The sigmoid colon is attached to the posterior pelvic wall by fan-shaped sigmoid mesocolon.
Sigmoid colon होगा वो posterior pelvic wall के साथ अटैच होता है by means of fan shaped sigmoid mesocolon. ठीक है, attached anteriorly to the male in the urinary bladder. Males में urinary bladder के साथ अटैच होगा, जबकि फीमेल में posterior surface of the uterus and posteriorly to the rectum. ये इसकी पोजीशन जो अटैचमेंट है. Next is the rectum. Rectum is about 13 centimeter long and begins in the front of the third sacral vertebra. ठीक है, जो sacral vertebra है third, उसके बराबर ये इसकी पोजीशन होती है. And its continuation of the sigmoid colon passes downward following the curve of sacrum and coccyx. ठीक है, जो sacrum और coccyx का means जो lower vertebrae of the spinal cord है उसको follow करेंगे in the form of curve बनेगा और that is occur downward. It ends in the front of the tip of the coccyx and become continuous with the anal canal. ठीक है, ends in the front of the tip से start हो जाता है और फिर आके anal canal पे इसके साथ mix हो जाता है, एक बन जाता है. The lower part of the rectum is dilated to form rectal ampulla. ठीक है, जो lower part है वो dilate हो जाता है जिससे rectal ampulla बन जाता है. This puborectalis portion of the levator ani muscles form a sling at the junction of the rectum with the anal canal and pulls this part of the bowel movement. ठीक है, मेरे अंडरलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें. जो puborectalis portion है मींस pubic का मतलब होता है जो pelvic cavity का जो एरिया है उसको हम कहेंगे pubis, pubic या pubis. rectalis यहाँ पे क्या है, रेक्टम और प्यूबिस के जो पोर्शन है, ठीक है, वहां पे मसल्स होंगी जिसको हम कहेंगे लेवेटर एनी मसल्स. वो लेवेटर एनी मसल इस एरिया में एक स्लिंग बनाएंगे जंक्शन का. मींस के एक जंक्शन बनेगा रेक्टम और एनल कैनाल का, जिस जंक्शन का एक स्लिंग होगी. उस स्लिंग का काम क्या है कि वो जो बाउल मूवमेंट है उसको फॉरवर्ड की तरफ पुल कर, ठीक है, जिससे एनोरेक्टल एंगल बन जाता है. दोबारा इसको देख लें. प्यूबोरेक्टस पोर्शन मींस के जो रेक्टम और प्यूबिक का जो कंटिन्यू जो पार्ट है, जो कॉम्बिनेशन है पार्ट है, वहां पे लेवेटर मसल्स होती है. लेवेटर मसल्स का ये जो पोर्शन है वो बेसिकली स्लिंग बनाएगा एट द जंक्शन. एक स्लिंग बनती है, स्लिंग का मतलब क्या है, पट्टी टाइप, ठीक है, रस्सी. तो वो बनाएगा कहाँ पे, उस जंक्शन का नाम क्या है, रेक्टम और एनल के साथ, मींस रेक्टो एनल जंक्शन. तो उस रेक्टो एनल जंक्शन जो है वहां पे ये इसकी जो स्लिंग होती है वो बनती है. इसका काम क्या है कि वो जो बाउल मूवमेंट है उसको फॉरवर्ड की तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं. सॉरी. The peritoneum covers the anterior and lateral surface of the first third of the rectum. जो first third है वो anterior and lateral surface of the peritoneum cover कर लेता है, and only the anterior surface of the middle third and leaving the lower third devoid of the peritoneum. Typical MCQs है कि the lower third आपका जो peritoneum के अलावा होगा, बाकी ऊपर जो first और middle third वो peritoneum से covered होगा. Look at this diagram. रेक्टम और एनस को एक्सप्लेन किया है इन लोगों ने. सेगमाइड कोलॉन की बात कर रेक्टम आ जाता है और फिर जाके वो एनस में कन्वर्ट होगा. दिस इज अ रेक्टम. ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड उसमें होंगे. लेवेटर एनी मसल्स मींस के जो मसल्स हैं जो कि रेक्टम और एनस के बाद इसके बीच में जो होंगे, जो एनस के साथ अटैच होती है, उसको हम कहेंगे लेवेटर एनी मसल्स. और फिर दो स्फेंक्टर्स होंगे. स्फेंक्टर्स का मतलब क्या होगा, मस्कुलर ओपनिंग, इंटरनल एनल स्फेंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फेंक्टर. ठीक है, ये आप लोगों को नजर आता है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ होगा और ये एनल की तरफ होगा. इन दोनों का काम क्या है, जो बाउल मूवमेंट है ड्यूरिंग डिफेकेशन उसको कंट्रोल करने में इसका रोल होता है. ब्लड सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन होती है बाय मींस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सप्लाई करेंगे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. इट मींस कि सुपीरियर और
इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के जो ब्रांचेस हैं वो जाके सप्लाई करेंगे टू द लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को, एंड अलोंग दिस इलियोसिकल आर्टरी जो कि रेक्टल आर्टरी को सप्लाई करें, रेक्टम को। वेनस सप्लाई क्या होगा? वेनस सप्लाई बेसिकली क्या है, रिवर्स हो जाती है विद द आर्टरीज। सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जाके ये वापस आ जाता है। लैम्प ड्रेनेज ऑफ टू द लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है बेसिकली कि ड्रेन द लैम्प फ्लूइड टू द सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर की तरफ ये आ जाता है, जिसके बाद फिर वो जाके ड्रेन होता है टू द मेन सिस्टम। नर्व सप्लाई होगा बाय मींस ऑफ वेगस नर्व एंड मेसेंटेरिक प्लेक्सस बाय सिंपैथेटिक एंड वेगल नर्व थ्रू सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस। इट मींस कि एक वेगस नर्व और दूसरा मेसेंटेरिक प्लेक्सस, ये दोनों सप्लाई करेंगे फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। फंक्शंस क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, 90% ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। विटामिन के प्रोडक्शन में भी लार्ज इंटेस्टाइन का रोल है। विटामिन के इज अ टिपिकल एग्जांपल जो कि यहाँ पे बनता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी जो जिसको हम कहेंगे गट फ्लोरा, गट फ्लोरा जो है वो बेसिकली क्या है, यूजफुल बैक्टीरियाज होती हैं। तो यूजफुल बैक्टीरिया की जो एक्टिविटीज होगी वो भी लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से नहीं होती है। मास मूवमेंट और डिफेकेशन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। मास मूवमेंट का मतलब क्या है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। डिफेकेशन में क्या है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बॉडी से कैसे निकालना है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फीसेस, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी डाइजेशन हो सकती है वो हो जाएगी, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर उससे एब्जॉर्ब होके जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो जाके रिमूव हो जाता है। सो ये यहाँ पे फीसेस बनती है। इट मींस दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड लिखा है। गॉबलेट सेल दैट प्रोड्यूसेस द म्यूकस दैट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। ये गॉबलेट सेल है, मींस छोटे ऑर्गन्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन होती है। Assignment is what are the external and internal differences between the small and the large intestine, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल और एक्सटर्नल जो फंक्शंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं वो मेंशन करने हैं, जिसमें स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जिसमें फंक्शंस, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आए होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, वी विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।